Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस 2 सेकंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारछि एबे मु प्लस 3 सीबीसीएस ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुडा अपलोड करिवि जदि भल लागिला ताले लाइक कर देबो एवं सब्सक्राइब कर देबो जो वीडियोज गुडा मु अपलोड करिवि तार नोटिफिकेशन पई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट कर देबो गोटे इंपोर्टेंट जिंस वीडियोज रो ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुछो तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अछि तमे ताकू पढे मध्ये परिबो एठी एडवांस रे क्लिक करी तमे रिजोल्यूशन बढ़े परिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देबी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रु तमे क्लिक करी डाउनलोड मध्ये करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तमे एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तमे सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें पढिबा अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहले हमें जानिछु energy can never be created nor be destroyed. It can only be transformed from one form to another, and the total quantity of energy remains constant. But however, যদি আমি elementary particle কথা কইবা then the conservation of energy is somewhat more complicated. Why so? Because a large function of total energy is oftenly interchanged between the rest energy which is associated with the mass and kinetic energy or potential energy. ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟାର ଯଦି ଆମେ ସमेସନ୍ କାଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ total energy ପାଇବା which is conserved in any reaction. Suppose for example ଆମେ ଏଠି neutral K measure ନେଲା count which is giving you pi plus, pi minus and pi 0. This one is allowed. However, যদি আমি ଏବେ ତଳେ second reaction ଦେଖୁଛୁ the same count is giving you pi plus, pi minus, pi 0 and pi 0. Okay, so extra pi 0 गोटे associate ही गला then this reaction is forbidden. Okay, so काहींकि ହେଲା एमती it is because the energy of K0 particle is not great enough to make 4 pions even if they all could make at rest. Okay, ତେଣୁ କରି এই চারিটা পায়ন ক্রিয়েট করিবা या ପାଇଁ সম্ভবপর নুহ তেণু एज पर द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी এই রিঅ্যাকশনটাକୁ ଆମେ फॉरबिडन କହିବା ତ ଏଇ भलिया गुडाए कंजर्वेशन लॉ को यूज करिकी परीक्षा रे पड़े जेमति कि एंती तमरो रिएक्शन देथिबो आ कोउटा कंजर्व्ड अछि कोउटा कंजर्व्ड नुहे तमरो एमती क्वेश्चन आसे ओके सो आकु एमती हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखिबा कंजर्वेशन ऑफ लेप्टन नंबर बेरियन नंबर आइसोस्पिन देन योर चार्ज स्ट्रेंजनेस पैरिटी बहुत किसी अच्छी ओके अच्छा ताले एबे देखो आम जदि टोटल एनर्जी कहिबा ऑब्वियसली इट इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी तो सपोज डेल्टा के प्लस डेल्टा भी ए हिसाब रे आम टोटल एनर्जी को लिखिला सो डेल्टा के हेगला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और डेल्टा भी हेगला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओके एबे जदि आम एलिमेंट्री पार्टिकल कथा कहिबा देन देयर बिहेवियर इज actually restricted by a number of conservative laws or invariance principle भी आपको कहा जाए in other words certain properties which are representative quantities must remain unchanged during any process माने any reaction okay so change in kinetic energy जोटा थिला del k of the particle obviously जदि आमे कहिबा ए पार्टिकल टा डिस्प्लेस होउची थ्रू ए पाथ ds वेक्टर एटा गोटे डिस्प्लेसमेंट आमे नै गला अंडर द एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स f ताले आमे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल k और डेल्टा k को लिखि परिबा एज इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds ओके ए हिसाब रे आमे आसी गला इंटीग्रेशन टा अच्छा सिमिलरली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी del v this will now become negative of the change in the kinetic energy এটা চার্জ হবনি এটা চেঞ্জ হবো প্রিন্টিং মিস্টেক আছে ওকে তাহলে এটা হয়ে গেল del v equal to minus of fs ds or fds which is nothing but minus of delta k তেণু করি আমি দেখিলা যে kinetic और potential energy দুইটা equal and opposite আসিলা that means the net energy e or total energy e becomes 0 that means the net energy or total energy 0 जदि कहूची ता माने ये सिग्निफाई करूची that the interactions are conservative okay because as per the conservation of energy the total energy remains constant okay so nature रे हमरो conservation of energy rule टा लागू होउची अच्छा
suppose आम ग्राविटेशनल आउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन देखुचु then these are conservative, whereas in case of weak and strong interaction actually these are non-conservative. Okay, so ये हला conservation of energy. Similarly एबे जदि आम conservation of momentum देखिबा ताले भी सेम वे रे आमे याकू बाहर करि परिबा. सपोज चेंज इन मोमेंटम आमे नै गला डेल्टा पी ऑफ ए पार्टिकल ताले आमे याकू डिफाइन करि परिबा एज पर द न्यूटन्स सेकंड लॉ. Delta P is equal to integration from T1 to T2 Ft dt. Okay, rate of change of momentum होची तमारो force. Okay, so particle physics रे कोन हुए for any decay reaction to take place the total momentum before and after decay should be equal. Okay, before decay और after decay total momentum समान हेबा कथा. अच्छा जदि आमे एबे relativistic theory लगाउछु ताले आमे जानिछु as per the relativistic theory total energy E गोटे पार्टिकल रो having rest mass m0 और momentum p ताले याको आमे लिखि परिबा as square root of m0 square c to the power 4 plus p square c square or square root of p square c square plus m0 square c to the power 4. एठी c हे गला velocity of light. आज यदि आमे ग्राफ पकाउछु between the energy by taking it on the y axis and momentum by taking it on the x axis ताले तारो फिगर टा एई भलिया आसीबो आ ए जो इक्वेशन 1 this is the result which is the well known Einstein's equation at the zero momentum. Okay, ताले देखो यारो ग्राफ टा तमरो एई भलिया आछी. ओके जते बेले एठी E equal to PC हे जिवो that means m0 square c to the power 4 टा 0 हे गला हला ताले एई भलिया स्ट्रेट लाइन आसीबो. Okay, so this is the Einstein's famous equation. Okay, for the case of zero momentum. अच्छा ताले ये जो टर्म m0 c square याको आमे कहिबा intrinsic energy और rest mass energy of the particle. Suppose एठी momentum जो अछि small p of the particle आमे याको very small quantity हिसाब रे नेला instead of taking that to be 0 then RHS of equation 1 becomes m0 c square square root 1 plus pc by m0 c रो स्क्वायर हेगला एटा आ याको आमे जदी बाइनोमियल थ्योरम हिसाब रे एक्सपांड करूछु ए स्क्वायर रूट को ताले केवल जदी फर्स्ट टू टर्म आमे नै गला प्रथम दुईटा टर्म अप टू सेकंड ऑर्डर ताले m0 c स्क्वायर into 1 plus 1 by 2 pc by m0 c square रो स्क्वायर हेगला. ओके हायर ऑर्डर टर्म्स को आमे नेग्लेक्ट कर देला ताले एठी एई एक्सप्रेशन को आमे एनर्जी पाई बाहर करि परिबा इजीली E equal to m0 c square plus p square by 2m. ताले एई एक्सप्रेशन को एबे लक्ष्य करो एठी p square by 2m सेकंड टर्म जोटा it is referring to the expression for kinetic energy आउ m0 c square ये हेगला तमरो रेस्ट मास एनर्जी. अच्छा एठी देखो जदि आमे very large moment आनौछु that means p is very greater than mc ताले सेम एक्सप्रेशन एनर्जी रो इक्वेशन 1 को जदि देखिबा ताले E is simply equal to pc. Okay, so for particles such as photons neutrino which are having rest mass nearly zero, okay zero rest mass यांकर थाए ताले तांको पई रिलेशन आसीला एनर्जी रो E equal to pc which is valid and which is shown by the dashed line जो आमे फिगर रे dashed line रे देखुतिला. अच्छा जोरा कि तमरो स्ट्रेट लाइन आस्तला ए फिगर रे देखो this one E equal to pc एटा आसीबो तमरो फोटोन आउ न्यूट्रिनो पई which are having rest mass energy to be equal to 0. Okay, अच्छा ताले सपोज एबे आमे कंसीडर करिबा गुटे पार्टिकल which is moving with a rest mass m0. Suppose it decays into product particles having masses to दुईटा product particle आसिला जार mass आमे नेगला m1 and m2. Then energy and momentum of the particles after decay suppose ताको नेगला आमे e1 p1 first particle पाई आउ e2 p2 हेगला तमरो second particle पाई. Then according to the law of conservation of energy हमरो m0 c square because प्रथमे particle टा आमे नेजु rest mass रे तेणु या सहित किछि momentum associate नाही it is equal to first जो product आछि m1 square c to the power 4 plus p1 square c square. Similarly second particle रो भी एई भले आमे लिखि देला. अच्छा
तापर एबे जदि आमे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाउछु ताले देखो रेस्ट रे थिला हमर इनिशियली पार्टिकलटा सो एटा एलएचएस रे हमर 0 आसिला RHS रे हमर आसिगला P1 plus P2. Okay, so in order to have decay the following inequality must be valid. Inequality टा कोन जे ए जो रेस्ट मास अछि m0 this must be greater than m1 plus m2, or in simple words, in a decay the total mass of the products must be less than the rest mass of the initial particle. Okay, ताले आमर पार्टिकलटा जेहेतु रेस्ट रे अछि तेणु तार मोमेंटम बिफोर डिके हो 0, so that the magnitude of the momentum of this decaying particle is insignificant during this decay process. Suppose आमे गोटे एग्जांपल नेला गोटे चास्ट पायन अछि which is decaying into particles, ताहले जेमति आमे ऊपर डिस्कशन कला जे टोटल रेस्ट मास ए प्रोडक्ट पार्टिकल्स रो always less than the rest mass of the पायन इनिशियल जो पार्टिकलटा थिला. ओके, सपोज आ गोटे एग्जांपल जदि आमे नेबा गोटे आमे देखिबा एबे पेयर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन पेयर जोटा कि दुईटा फोटोन रो कोलिजन रो आछि एज यू कैन सी इन दिस रिएक्शन. सो एई रिएक्शन रे इनिशियल पार्टिकल को जदि देखिबा एठी आमेर रेस्ट मास किछि नाही, दे डू नॉट हैव रेस्ट मास. आमे जानि जो फोटोन रो किछि भी रेस्ट मास थाइनी, बट हाउएवर जेतेबेले सेमानकर कोलिजन होउछि जो दुईटा पार्टिकल एबे बाहरला इलेक्ट्रॉन आउ पोजिट्रॉन तांकर किंतु रेस्ट मास आसुछि. ताले ए एग्जांपल को आमे जदि कंसीडर करिबा आउ थरे इन व्हिच the radiation is now converted into matter. Okay, so a case रे radiation टा होची left side रे it is converted into matter, that means mass in the right side. तो suppose P1 और P2 ही गला momenta of the photon before the decay process. अच्छा, after decay the momenta of electron and positron ये ही गला suppose P3 और P4 respectively. Then according to the law of conservation of energy आमे ऊपर जो पढ़िला एठी P1C plus P2C this will be equal to how much. एठी जेतु केवल मोमेंटम अछि तेणु मोमेंटम दुईटार एडिशन है, रेस्ट मास तो किछि नाही. अच्छा, RHS रे आसी जिवो किंतु रेस्ट मास भी अछि आ मोमेंटम भी अछि, सो सेही हिसाब रे तुमरा एक्सप्रेशन एठी आसिला. अच्छा, सिमिलरली एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम केते हला सिंपली P1 plus P2 equal to P3 plus P4. ओके, अच्छा, टोटल एनर्जी एबे जदि आमे देखिबा दुईटा जो फोटोन रो this must be more than 2m0 c square. Okay, this is nothing but the twice of the rest mass energy of an electron. अच्छा, suppose ए जो दुई photon having equal momenta collide करछंती, then total momentum before the decay become 0 केतेबेले when these two photons collide head on मुहामुही जेतेबेले collide होबे. सो ए केस जोटा कि हेड ऑन कोलिजन है ता माने एबे RHS रे जो अछि P3 plus P4 this must be equal to 0. ओके, इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम जेहेतु एठी LHS रे आसी गला, दिस मीन्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोजिट्रॉन हैव 0 मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ओके, ताहले आमे एबे साबित करि पारिला जे जो तमरो टोटल एनर्जी अछि फोटोन रो इट appears to be minimum and it is equal to 2m0 c square. Okay, thank you.